गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हीमोफीलिया ए। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंटिस्ट ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने एक जीन थेरेपी बनाई है जिससे कि हीमोफीलिया ए को ट्रीट किया जा सकता है, जो कि एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है। उससे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग एपिसोड्स बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो इसे 5 पेशेंट्स पर टेस्ट भी किया गया है तमिलनाडु में, और उससे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं हमें। अब हम समझते हैं जीन थेरेपी होती क्या है। तो बेसिकली आप एक जीन को ऑल्टर कर देते हो या मॉडिफाई कर देते हो, ताकि उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए और लिविंग सेल्स में उसका जो है वो हमें चेंज देखने को मिले। तो इससे हम कई तरह के डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं, जैसे कैंसर हो या जेनेटिक डिसीजेज हो, इन्फेक्शियस डिसीजेज हो। तो इसमें 3 तरह के मैकेनिज्म्स काम करते हैं। पहला, तो आप जो डिसीज़ कॉजिंग जीन है उसको ही आप रिप्लेस कर दो, ताकि जो न्यू जीन होगा वो उसकी हेल्दी कॉपी जो है वो जीन की वो मल्टीप्लाई हो। दूसरा होता है कि इनएक्टिवेट कर दो उस डिसीज़ कॉजिंग जीन को, कि उसको वो काम ही करना बंद कर दे, तो फिर ऑफ कोर्स वो जो बैड कॉपीज़ बना रहा है वो बनाना रोक देगा। या फिर एक न्यू और मॉडिफाइड जीन बॉडी में डालो, जो कि उस जीन को, उस डिसीज़ को ही ट्रीट करने में हमारे को हेल्प कर दे। ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है, उनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, ताकि वो थेरेपेटिक जीन्स जो है वो ह्यूमन सेल्स में लेके जाएं। कई बार वायरसेस को या बैक्टीरियाज को भी जो है वो वेक्टर्स की तरह यूज़ किया जाता है, कि वो थेरेपेटिक जीन्स जो हैं ह्यूमन सेल्स में जाकर डिलीवर करके आएँ। ठीक है। अब हीमोफीलिया ए क्या होता है? तो हीमोफीलिया कई तरह की जो है होते हैं हीमोफीलिया। उसमें हीमोफीलिया ए जो है वो एक रेयर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड जो है आपका क्लॉट नहीं होता। अगर चोट लग जाए तो ब्लड बहता ही रहेगा, वो क्लॉट ही नहीं होगा। तो जब आपकी ब्लीडिंग होती है बॉडी में, तो कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है। तो आपकी जो है वो ब्लड जो है वो रुक जाता है, मतलब वुंड जो है वो भरने लगती है। तो कई तरह के लगभग 20 डिफरेंट स्पेशल प्रोटीन्स लगते हैं उसको एगुलेशन के लिए, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर नंबर 8 होता है वो काम नहीं करता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से जगह है कि अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हुई तो वो रुकेगी ही नहीं। अगर ब्लीडिंग होती रही तो ऑफकोर्स इंटरनल हो गई अगर खासकर, तो वो रुकेगी नहीं, उसको आप रोक ही नहीं पाओगे, तो फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है उससे। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं? जो ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर है जो नहीं काम कर रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी करके, है ना। या फिर कई मेडिकेशंस भी होती हैं जिससे कि क्लॉटिंग आप प्रमोट करो, और फिर या फिर सर्जरी करके उस पर्टिकुलर डैमेज जो कि ब्लीडिंग से हो रहा है उसको रोक दो। ठीक है। तो लेकिन जो इसकी ट्रीटमेंट होती है वो बहुत महंगी होती है, 2.5-3 करोड़ रुपए की पड़ती है, और 10 साल तक ट्रीटमेंट चलती है। इंडिया में सबसे जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर पेशेंट्स हैं हीमोफीलिया के। तो जीन थेरेपी एक तरह से वन टाइम सोल्यूशन बन जाएगा, जिसमें कि बॉडी में फैक्टर नंबर जो 8 है, जो कि ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, उसको आप जो है वो फंक्शनल जीन उसका डाल सकते हो, और बार बार जो है फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जो ये टेस्ट करके देखा गया, तो किसी भी पर्सन में जिसको जिसको ये दिया गया उसमें 14 महीने तक ब्लीडिंग एपिसोड्स नहीं नोटिस किए गए। ये प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ही सिर्फ जीन थेरेपी पे काम कर रहा है। यूएस एफडीए ऑलरेडी 2023 में इसकी थेरेपी अप्रूव कर चुका है, जिसमें कि वो एडिनो वायरस वेक्टर्स का इस्तेमाल करके थेरापेटिक जीन्स जो है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एडवांस जीन थेरेपी जो है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती हैं। लोकलाइज करना जीन थेरेपी मैन्युफैक्चरिंग को, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यंग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना, जिसमें कि कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे लिवर की मेच्योरिटी या हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी एक बहुत ही चैलेंज रहता है। ठीक है। तो अदरवाइज जीन थेरेपी एक सेफ, एक्सेसिबल और इफेक्टिव सॉल्यूशन बन के सामने आ सकता है ऐसी डिजीजेस का। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेलवेज बिल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में पास कर दिया गया है। ये बिल जो है 1905 का जो एक्ट है उसको रिपील करता है। 1989 के एक्ट के अंदर ही उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा, उसके प्रोविजंस को। तो एक तरह से सिंप्लीफाई किया जा रहा है लीगल फ्रेमवर्क को। अब इसका जो मेन मोटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है, कि वो नंबर ऑफ रेलवे बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कर सकें, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या टर्म्स ऑफ सर्विस उनकी डिसाइड कर सके चेयरमैन और मेंबर्स की, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट भी उनकी डिसाइड कर सकें। ठीक है। तो रेलवे बोर्ड की सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन रहेगी, ऐसा उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा रहा है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईजी किया जा रहा है। ठीक है। तो जो 1905 के एक्ट के प्रोविजंस हैं उसको 1989 के साथ मर्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है। और एक मॉडर्नाइज रेलवे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है।
तो लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि इससे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेटाइज़ करना चाहती है इंडियन रेलवेज़ को, और बोर्ड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जब ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा गवर्नमेंट का तो रेलवे बोर्ड की जो ऑटोनॉमी है वो इरोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं इसके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2024 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है वो WHO ने रिलीज़ की है, और इसमें बताया गया है कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाया है रिड्यूस करने में मलेरिया के इंसिडेंस और मोर्टेलिटी दोनों में। ठीक है, तो मलेरिया क्या होता है? एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। लोगों में ये फीमेल एनोफिलिस मस्किटो से जो है फैलता है। ठीक है, प्रिवेंटेबल भी है, क्योरेबल भी है, और ये कंटेजियस नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। ठीक है, सिर्फ मस्कीटो बाइट से ये फैलता है। तो अगर हम देखें हाइलाइट्स इस रिपोर्ट की, अफ्रीका का जो रीजन है वो 95% जो डेथ मलेरिया से हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूट अफ्रीका रीजन ही कर रहा है। WHO ने सर्टिफाई किया है 44 कंट्रीज़ और 1 टेरिटरी इंक्लूडिंग इजिप्ट, वो अभी तक मलेरिया फ्री हो चुके हैं एज ऑफ नवंबर 2024। रिडक्शन इन केसेस देखने को मिले हैं कई कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, और कई केसेस में कई कंट्रीज़ में इंक्रीज़ देखने को मिले हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार में। WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है वहाँ पर 1.5% ऑफ ग्लोबल मलेरिया केसेस 2023 में थे, और इंडिया उसमें नियरली हाफ ऑफ द केसेस को, और इंडोनेशिया लगभग 1/3 ऑफ द केसेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर हम चैलेंजेस देखें, फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टू 8.3 बिलियन का टारगेट होना चाहिए था मलेरिया को जो है वो डील करने के लिए ग्लोबली, लेकिन $4 बिलियन की ही फंडिंग जो है वो अभी तक अरेंज हो पाई है। तो जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स हैं, मेडिसिन हैं, या बाकी क्रिटिकल टूल्स लगते हैं इसकी फाइट के अगेंस्ट, फाइट में मलेरिया के अगेंस्ट, तो वो अभी तक उसके लिए सफिशेंट फंडिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है WHO का रिकमेंड किया है कि अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के साथ एंगेजमेंट की जाए, और WHO ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स और इंक्रीज़ करो, इनोवेटिव अप्रोचेज़ लेकर आओ, टारगेटेड एक्शन रखो हाई बर्डन रीजन्स में, खासकर अफ्रीका में। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? इंडिया ने सक्सेसफुली रिड्यूस किया है अपना मलेरिया बर्डन, और हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ एंडेमिक कंट्रीज़ को एग्जिट कर लिया इंडिया ने। कंट्री के मलेरिया केसेस लगभग 69% से डिक्लाइन हुए हैं। जो आर्टेमिसिनिन होता है वो सबसे ज़्यादा मलेरिया पैरासाइट्स को जो है वो किल करता है। वो एक पार्टनर ड्रग है, वो इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ACT बेस्ड थेरेपी जो होती है, नेट्स ब्लॉक या फिर मस्कीटोज़ को किल करना, मस्कीटो की पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, उनके लाइफ स्पैन को रिड्यूस करना, उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यू जनरेशन इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स ऑफर किए जा रहे हैं, खासकर जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया हैं, और उससे एनहेंस प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा का जो इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर है उसने रिवील किए हैं स्ट्रक्चर्स न्यूली डिस्कवर्ड एक्सरे बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, तो ये IXPE है क्या, नासा का स्मॉल एक्सप्लोरर मिशन है जो कि कोलैबोरेशन में चल रहा है इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ। 2021 दिसंबर में इसे लॉन्च किया गया था। नासा का पहला मिशन है जो स्टडी कर रहा है पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है, तो इसमें 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं युवा सहकार स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो है उन्होंने युवा सहकार स्कीम के बारे में लोकसभा को बताया है कि ये स्कीम एनकरेज करना चाहती है न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ उनके या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको सपोर्ट करना चाहती है। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो भी सिर्फ 3 महीने हुए जिन्हें, उनको लॉन्ग टर्म लोन देना NCDC के थ्रू, NCDC क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म लोन उन्हें 5 साल तक का दे रहे हैं उनके किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जा रही है। ठीक है, अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइपर लूप ट्रैक। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली IIT मद्रास ने 410 मीटर का हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है वो कंप्लीट किया है। तो हाइपर लूप ट्रैक क्या होता है? एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें कि पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशराइज्ड व्हीकल्स की तरह ये काम करते हैं, और इंक्रेडिबल स्पीड पर ये चल पाते हैं क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। तो समझ लो आपने एक बहुत बड़ा पाइप, आप उसको ज्यूम करो, उसके अंदर से आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, तो उसके अंदर आप
को जो पॉड्स होते हैं जिसमें कि पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, वो बहुत ही तेज़ी से वो ट्रैवल कर पाएंगे, है ना। तो ये वैक्यूम सील ट्यूब्स के अंदर ये ट्रेन्स ऑपरेट होंगी। और क्योंकि ये मैग्नेट्स के ऊपर फ्लोट करेंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, तो और ज़्यादा स्पीड आप इसमें अचीव कर सकते हो। तो लगभग 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो है ये पॉड्स ऑपरेट कर सकेंगी। ये जो कंसेप्ट है हाइपरलूप का, इलॉन मस्क ने 2012 में पॉपुलराइज किया था। और इंडिया का जो ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट है, ये इंडियन रेलवेज, आईआईटी मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप टीम और टीयूटीआर जो कि एक स्टार्टअप है, वो मिलकर इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is hemophilia A. This topic is important for your social issues. So Indian scientists have recently achieved a major milestone. They have used a gene therapy to treat severe cases of hemophilia A, which is a rare genetic condition that causes life-threatening bleeding episodes. This pioneering work has been tested on 5 patients in Tamil Nadu and it has shown promising results. Okay, so, what is this gene therapy? So, first of all, we need to understand that human gene therapy basically aims to modify or manipulate the gene or alter the biological properties of living cells for therapeutic use. Okay, so this technique can be used to cure any disease like cancer, genetic diseases, or infectious diseases. So, how does this work? So, in first case you can replace the disease causing gene with a healthy copy of the gene. In second case you can either inactivate that disease causing gene, so which is not functioning properly, or the best way is to introduce new or modified genes into the body so as to help the treatment of a disease. Okay, so this is the third type, in which we use circular DNA molecules. We genetically engineer them, and then they are used to carry therapeutic genes to the human cells. Okay, we can also use the some viruses or some bacteria which are basically harmless ones, and they can become the vectors or vehicles, and they can carry the therapeutic genes into human cells. So the goals of gene editing is to disrupt harmful genes or to repair mutated ones. Okay. So what is hemophilia A? Hemophilia, there are several types. There are three types basically of hemophilia, and this hemophilia A is basically a rare inherited blood disorder in which the blood does not clot as it should be. Okay. So let's suppose that if you get an injury, the blood will not clot, and the blood would continue to flow out of your body. Okay. So when you bleed, a series of reactions take place in the body so as to help the blood clot. It involves almost as 20 different special proteins which are called the clotting factors. In the hemophilia A, the clotting factor number 8 does not function. So prolonged bleeding can happen, and of course excessive blood loss can be deadly also. So bleeding sometimes can occur also internally in joints or muscles, or even externally. Okay, so how it is it treated? So we can boost the clotting factor levels, like we are using the factor 8 gene therapy or replacement therapy, so that we can replace the missing clotting factors here. Sometimes there are medications also to promote clotting, or even surgeries done to repair the damage caused by bleeding. So, but this treatment is very costly. It costs almost as high as 2.5 crore rupees per patient over 10 years, and that's why it becomes inaccessible for many in India. Okay, despite the fact that India has the world's second largest patient pool of hemophilia in the world. Okay, so how is it promising? So gene therapy introduces a functional gene which enables the body to produce sufficient factor 8, therefore reducing or eliminating the need for repeated infusions. So Indian trial has used the lentivirus, which is a safe vector compared to adenovirus, and it eliminates the need for immunosuppressive drugs. Uh, it has shown promising results. Patients who were treated with this gene therapy, they showed no bleeding episodes over 14 months. And this project is being funded by Union Department of Biotechnology. So US also has approved Roctavian, which is a basically in which you use adenovirus vectors to deliver the therapeutic gene. And uh, there are certain challenges as well in this gene therapy success. So uh, conducting such high technology advanced gene therapy in a developing country is not cost effective for us. um,
Localizing gene therapy manufacturing in India can become a challenge also. So overcoming barriers like immunosuppressive therapy and age limitations is also a problem. So this method may allow younger patients to receive treatment, and so they can overcome challenges like liver maturity and that death health. Okay, so this gene therapy can offer a safer, more accessible, and effective solution for the patients. So the next topic is Railways Bill. This topic is important for your governance section. So Railways Amendment Bill 2024 was passed by the Lok Sabha recently. This bill repeals the 1905 Act, and it is basically going to simplify the legal framework by consolidating laws. It empowers the central government to determine the number of railway board members, qualifications, experience, and terms of service for the chairman and members, and also the method of appointment for these positions. So this bill is going to consolidate provisions for easier administration, and it will also going will be maintaining the railway board's central authority. So this bill combines the provisions of the 1905 Act and the 1989 Act, and this will also enable the central government to prescribe updated qualifications and service terms for the railway board members. And the aim is to align the recommendations for a modernized railway structure. But opposition is saying that the government could use this bill to privatize Indian railways, and increased government control over board appointments might also erode the autonomy of Indian railways. Okay. So the next topic is World Malaria Report 2024. This topic is important for your social issues. So 2024 World Malaria Report has been released by WHO recently, and it has said that India has made significant progress in reducing malaria incidence and mortality. So what is malaria? It's an acute febrile illness caused by Plasmodium parasites, which are spread to people through bites of infected female Anopheles mosquitoes. So it's a life-threatening disease primarily found in tropical countries. It is preventable and curable. Malaria is not contagious and it cannot spread from one person to another. The disease is transmitted through bites of female Anopheles mosquitoes. Okay. So what does the report say? According to this report, African region accounts for 95% of the deaths due to malaria. As of November 2024, WHO has certified 44 countries and one territory, including Egypt, most recently as malaria free. Okay. So, as per this report, there we have seen a reduction in cases, especially in countries like Nepal, India, Bangladesh, and Indonesia. Whereas we saw increase in cases in North Korea, uh, Thailand, and Myanmar. So WHO's Southeast Asia region accounts for 1.5% of global malaria cases in 2023, and India contributed nearly half of it, and Indonesia about one third. So, what are the challenges? So, funding in 2023 reached $4 billion, which is far below the $8.3 billion target set by the Global Technical Strategy. So, insufficient funding has resulted in gaps in insecticide treated nets, medicines, and other critical tools. So, WHO has recommended engagement with affected communities, and it has also urged increasing investments, innovative approaches, and targeted action in high burden regions, particularly in Africa. So, according to this report, India has successfully reduced its malaria burden, and it has exited the high burden, high impact group of endemic countries. Countries' malaria cases have declined by 69% since 2017. Okay, so what India has done? So, India has used the ACT therapy. Artemisinin that kills most malaria parasites has been used by India. Then we are also using the insecticide treated nets, net blocks, and we are which kills the mosquitoes. And we are offering enhanced protection to the forest and tribal areas like Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, and Northeast. Okay, so the next topic is Imaging X-ray Polarimetry Explorer. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer has revealed the structures in a newly discovered X-ray binary system, which is Imaging X-ray Polarimetry Explorer is a NASA small explorer mission in collaboration with the Italian Space Agency. So it was launched in December 2021, and is the first mission to study the polarization of X-rays from many different types of celestial objects. And the observatory also features three identical telescopes. Okay. So the next topic is Yuva Sahakar scheme. This topic is important for your
economy section. So recently, Minister of Cooperation has informed the Lok Sabha about Yuva Sahkar scheme, which aims to encourage newly formed cooperative societies with new or innovative ideas. So the aim of the scheme is to encourage young entrepreneurs who have formed cooperative societies, and these societies, which are in operation for a minimum of 3 months. The According to the scheme, the National Cooperative Development Corporation will provide them a long-term loan of up to 5 years as an incentive, and they will provide them 2% interest subvention at applicable rate of interest on term loans for the project activities. Okay. So the next topic is Hyperloop track. This topic is important for your economy section and also your science and tech section. So recently, IIT Madras has completed a 410-meter Hyperloop test track, which marks a significant milestone in India's journey towards futuristic transport systems. So what is Hyperloop track? It's a high-speed transportation system in which pods, which function as the pressurized vehicles, they travel at incredible high speeds through the low-pressure tubes. So this concept was originally popularized by Elon Musk in 2012, and these trains operate within the vacuum-sealed tubes, therefore significantly reducing friction and allowing for unparalleled travel speed and energy efficiency. So these pods can reach speeds of up to 1100 kilometers per hour, and they maintain an operational speed of about 360 kilometers per hour. So these low pressure tubes are sealed to minimize air resistance, and these pods they float on magnets, therefore eliminating friction as well. Okay, so this India's Hyperloop project is a joint initiative of Indian Railways, IIT Madras Avishkar Hyperloop team, and TUTR, which is an incubated startup. Okay, so these were our topics for today. We are also going to share the weekly current affairs telegram in our Telegram group. Please also download that, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.